So, well, today we will discuss, we will learn a term which is very important, rank of a matrix. Then we will discuss what is the normal form of a matrix, and then Gauss-Jordan reduction method of finding the inverse of a matrix. So, what is rank of a matrix? A matrix is said to be of rank R. A matrix is said to be of rank R. R is a number, maybe 2, 3, 4. Okay? So, a matrix is said to be of rank R when it has at least one non-zero minor of order R. At least कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R होना चाहिए. ओके, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R. And second is every minor of order higher than R vanishes. Okay. If R is the rank of a matrix, this means at least one non-zero minor of order R. Second, every minor of order higher than R vanishes. Briefly, the rank of a matrix is the largest order of any non-vanishing minor of the matrix. Largest order of any non-vanishing minor of the matrix. This one is the definition of rank. You know what is minor? We have already studied in +2 classes. What is minor? In linear algebra, a minor of a matrix A is the determinant. Okay, is the determinant. So, minor is a determinant. A minor of a matrix A is determinant of some smaller square matrix, and this smaller square matrix is obtained from A by removing one or more of its rows or columns. So, a minor of a matrix A is the determinant of some smaller square matrix cut down from A by removing one or more of its rows or columns. Okay. And minors obtained by removing just one row and one column from a square matrix is first minor, okay, known as first minor, are required for calculating matrix cofactors. So, minor obtained by removing just one row and one column from square matrices are required for calculating matrix cofactors, which in turn are useful for computing both the determinant and inverse of square matrices. This one is the application of this minor. Okay. So, all these things, all type of minors, all these minors are required for calculating matrix cofactors, and that one is very important for computing both determinant as well as inverse of a square matrices. Okay. So, another definition to define this term rank: a number R is said to be the rank of a matrix A. A number R is said to be the rank of a matrix A if it possesses the following two properties. First property is there is at least one square submatrix of A, of order R whose determinant is not equal to 0. कम से कम एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R होना चाहिए, राइट, whose determinant is not equal to 0.
Okay. If the matrix A contains any square submatrix of order r plus 1 or higher of r plus 1, then determinant of every square submatrix of A of order r plus 1 should be 0. क्लियर? तो अगर रैंक r है तो उससे बड़े r प्लस 1, r प्लस 2 ये जितने भी आपके माइनस बनेंगे, ठीक है, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 होना चाहिए. So if a matrix A contains any square submatrix of order r plus 1, then determinant of every square submatrix of A of order r plus 1 should be 0. So remember these two important properties which can also be written like this way. Okay. So here two remarks are very, very important. If a matrix has a non-zero minor, okay, non-zero minor of order r, then rank is greater than equal to r. Non-zero minor of order r. So it may be possible non-zero minor of order r plus 1. Clear? So if a matrix has a non-zero minor of order r, then definitely its rank is greater than equal to r. And if all the minors of a matrix of order r plus 1 are 0, if all minors of a matrix of order r plus 1 are 0, then its rank is less than equal to r, less than equal to r. So remember these two important remarks. If a matrix has a non-zero minor of order r, then definitely its rank is greater than equal to r. And if all minors of matrix of order r plus 1 are 0, then its rank is less than equal to r. Okay. Then second concept is elementary transformations of a matrix. So what are elementary transformations of a matrix or elementary operations of a matrix? The following operations, 3 of which refer to rows and 3 of which refer to columns, are known as elementary transformations. Elementary transformations. So first type of this operation is the interchange of any two rows or columns. That one is the first type of elementary transformation, elementary operation. The interchange of any two rows. So interchange of any two rows. Okay. So that one is the first elementary operation which can be used in the matrices. Multiplication of any row, multiplication of any row by non-zero number. Suppose we are going to multiply second row by 3. So second row is defined by R2. Okay. So multiply every member of this row by 2 means 2R2. So that operation is also a fundamental or elementary operation of a matrix. So multiplication of any row or column by a non-zero number. Then third one is addition of a constant multiple of the elements of any row. Addition of a constant multiple of elements of any row to the corresponding elements of any other row. That one is the third elementary transformation. Okay. So let us see how can we explain these three type of transformations. The elementary row transformation will be denoted by the following symbols. These are the notations. First one, when we say interchange of any two rows, this means this operation is denoted by this symbol Ri interchange Rj, ith row interchange with jth row. Okay. So Ri interchange Rj for the interchange of ith and jth rows. Similarly, in case of columns, Ci interchange Cj for the interchange of I and jth column. Okay. Then multiplication of any row by a non-zero number. So ith row multiply by k, that one is denoted by this symbol Ri converted into k times Ri.
okay, for multiplication of ith row by k. Then third one is addition of a constant, addition of a constant, multiple of elements of any row, means p times rj, p times rj, multiplication, multiple of the elements of any row to the corresponding elements of any other row, means ri. So, this type of operation is denoted by this symbol, ri converted into ri plus p times rj for addition of ith row, for addition of ith row, p times the jth rows. Okay. And the corresponding column transformation will be denoted by writing C in place of R. Then next definition, what is equivalent matrix? देखो कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आप उस मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की ऑपरेशंस लगा सकते हो, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर. ओके, आप ith और jth रो को एक्सचेंज कर सकते हो, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जा रही है. ओके, सिमिलरली किसी पर्टिकुलर रो को आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट वन इज अ सेकंड टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स में एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किया जाए, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा. एंड दैट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल मैट्रिक्स by using different kinds of elementary transformations, and that matrix, that new matrix is known as equivalent matrix. That equivalent matrix, that matrix is equivalent to original matrix, but that new matrix is obtained by a sequence of elementary transformations. So, let us define what is equivalent matrix. So, two matrices A and B are said to be equivalent. Two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other, where one can be obtained from the other, means B can be obtained from A by a sequence of elementary transformations. So, B is obtained from A by a sequence of elementary transformations. Two equivalent matrices have the same order, definitely order उसका वही रहेगा, and same rank. तो ऐसी elementary transformation करने से rank में variation नहीं आएगा. Okay? So, two such type of equivalent matrices have the same order and the same rank, and the symbol this is used for equivalence, not equal, not equal. Equal अगर आप लगाओगे तो इसका मतलब corresponding elements equal है और size आपका same है, but this matrix is equivalent and that equivalent is denoted by this symbol, this is used for equivalence. Now, next definition, what is elementary matrices? देखिए कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, ओके, मे बी 2x2, मे बी 3x3, मे बी 4x4, कोई यूनिट मैट्रिक्स दे रखा हुआ है. वो यूनिट मैट्रिक्स अगर उसके ऊपर आप एक ऑपरेशन अप्लाई करते हो, एक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो और एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा. आप फर्स्ट रो को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3x3 यूनिट मैट्रिक्स है, तो मेंबर्स आएंगे 3 0 0 0 1 0 0 0 1. तो एक ऑपरेशन लगाने के बाद, सिंगल ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और वो भी यूनिट मैट्रिक्स से, किसी और मैट्रिक्स से नहीं, यूनिट मैट्रिक्स से. ओके, सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज दैट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स बाय सब्जेक्टिंग इट टू एनी ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एनी ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. कोई एक यूज आप करोगे जब वो नया मैट्रिक्स जो बनेगा, दैट वन इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, दिस वन इज द यूनिट मैट्रिक्स. ओके, नाउ R23, this notation means R2 exchange with R3, right? So, second and third row exchange, you will get this matrix. This one is elementary matrix, right? And that one is also equivalent to C23. Now, second row को आप K के साथ multiply कर रहे हो, applying second elementary operation, you will get this matrix. This matrix is also elementary matrix. Now, R1 plus P times R2, R1 plus P times R2, we obtain this matrix. This matrix is also known as elementary
matrices. So, any matrix which is obtained from this unit matrix by using a single elementary transformation is known as elementary matrix. So, this one is the definition of elementary matrix. Now, we have one statement, important statement, elementary row transformations, maybe column, okay. Elementary row or column transformations of a matrix A can be obtained. So, elementary row transformation can be obtained by pre-multiplying in case of row, post-multiplying in case of column. So, can be obtained by pre-multiplying A by the corresponding elementary matrices, by the corresponding elementary matrices. So, understand this statement, elementary row transformations of a matrix A can be obtained by pre-multiplying A by corresponding elementary matrices. तो कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के साथ आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो भी रिजल्ट आएगा दैट वन इज इक्विवेलेंट टू elementary transformations of a matrix, elementary row transformation of a matrix. For example, consider the matrix this A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 and multiply this A matrix by R23. This one is elementary matrix. This one is elementary matrix and this matrix is obtained from unit matrix, right. So, multiply, when you multiply this matrix, we obtain this, right. If you see this matrix, the pre-multiplication by R23 has interchanged the second and third rows of A. The pre-multiplication by R23 has interchanged the second and third rows of A. Similarly, pre-multiplication by KR2 will multiply second row of A by K and pre-multiplication by R1 plus PR2 will result in addition of P times the second row of A and its first row. Okay. So, with the help of this example you can see this elementary row transformations of a matrix can be obtained by pre-multiplying A by the corresponding elementary matrices. Okay. Thus, pre-multiplication of A by elementary matrices, pre-multiplication of A by elementary matrices results in the corresponding elementary row transformations of A. Clear? So, with the help of example, you can understand this statement. Similarly, it can also be seen that post-multiplying will perform the elementary column transformations. Okay. Column transformation. So, underline this. Row means pre-multiplying and column means post-multiplying. Okay. Similarly, it can be seen that post-multiplication will perform the elementary column transformations. Then one more topic in matrices is very important. What is normal form of a matrix? What is normal form of a matrix? So, remember this statement, every non-zero matrix A, okay, every non-zero matrix A of rank R, this means we know the rank of this matrix is R and matrix A is non-zero, maybe rectangular, maybe square, okay, but every non-zero matrix A of rank R can be reduced by a sequence of elementary transformations, It may be row transformations, it may be column transformations or it may be combination of these two, clear. So, by a sequence of elementary transformations to the form this IROOO, O means null matrix or you can represent by 0, 0, 0, 0, 0 means O means null matrix. So, IR 0, 0, 0 called the normal form of A. So, every non-zero matrix A can be written like this way, okay, like this way, called the normal form of a matrix A. So, the rank of the matrix A
is R. The rank of the matrix is R if and only if it can be reduced to the normal form 1. So, if you know the rank of the matrix is 2, then we can represent this by I 2 0 0 0 like this way. If you know the rank of the matrix 3, then I 3 0 0 0. Okay. So, rank of the matrix A is R if and only if it can be reduced to the normal form 1. So, this means that we can evaluate the rank of a matrix by reducing a given matrix to the normal form. If we obtain this type of formation, this means rank of this matrix is 3, right. Second, since each elementary transformations can be affected by pre-multiplication or post-multiplication with a suitable elementary matrix, and each elementary matrix is non-singular, therefore, we have the following result. Very, very important result. Okay. Since each elementary transformation can be affected by pre-multiplication or post-multiplication with a suitable elementary matrix, and each elementary matrix is non-singular, each elementary matrix is non-singular, therefore, we have the following important result. Okay. Corresponding to every matrix A of rank R, there exist non-singular matrices P and Q. There exist non-singular matrices P and Q. The beauty of these two matrices P and Q is non-singular, right. Determinant of P is not equal to 0, determinant of Q is not equal to 0, clear. So, there exist non-singular matrices P and Q such that P A Q is equal to this normal form. P A Q is equal to I R, because rank is R, I R 0 0 0. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो P and Q है, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होगा. ओके. सो इफ A be M by N matrix, A be M by N matrix, then P and Q are square matrices of order M and N respectively. So, order of P is M, order of Q is N. Square matrices, P of order M by N, Q of order N by N. So, corresponding to every matrix A of rank R, there exist non-singular matrices P and Q such that P A Q is equal to I R 0 0 0. And if A be a M by N matrix, then P and Q are square matrices of orders M and N respectively. तो जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ओके, देन you will see how can we develop these two non-singular matrices. So, for the matrix A, find non-singular matrices P and Q such that P A Q is in the normal form. Okay. So, we can ask this problem like this way. Okay. Find non-singular matrices P and Q such that P A Q is in the normal form. अब देखिए यहाँ पर आप A को रिप्रेजेंट करोगे I A I. So, A can be written as I A I. This I is unit matrix, this I is unit matrix. देखिए ये मैट्रिक्स है आपका 3 by 3 का, दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. तो ये जो 3 है इस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 होगा, और ये 3 है इसका ऑर्डर भी आपका 3 होगा. सपोज इफ वी हैव गिवन A of order 4 by 3, then this unit matrix of order 4 and this unit matrix of order 3. So, remember this thing, but here this matrix is of order 3 by 3. So, A is this, A is this 1 1 0 1 2 minus 1 2 3 1 is equal to I is unit matrix, A as it is, I this unit matrix. So, we can represent A is equal to like this way. अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है. ये जो मैट्रिक्स है A,
इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। और इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैक्सिमम एलिमेंट्स को आपको जीरो बनाना है, ठीक है। और कोशिश करो इसको जीरो करने की, इसको जीरो करने की, इसको जीरो करने की, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, हो सकता है ये भी जीरो हो जाए, या ये भी जीरो हो जाए, या हो सकता है ये 1 हो जाए, ये 1 है, तो तभी आपका एक नॉर्मल फॉर्म बनेगा। और नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करनी है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास रो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रहे, जब भी आप इसको नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करनी है, ये जो पहले वाला है दिस। और अगर आपको कहीं बीच में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, राइट, तो आपकी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपने इस पे नहीं लगानी है, इस पे लगानी है। ओके, अप्लाई, यहां पे आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, यहां पे आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। अब वही बात आ गई जो मैंने पहले एक थ्योरम में लिखवाई थी, प्री मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग व्हेन रो इज कंसिडर्ड, रो ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड। ओके, अब देखिए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है सिंपली रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो इश्यू, क्लियर। लेकिन जब भी आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा P, ये A एज इट इज रहेगा, और ये आपका बनेगा Q। और ये हर स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने में एक्सपर्ट हो, वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको चेंज कर देंगे, ये चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो उसका Q ये आ जाएगा। हर बच्चे का Q और P डिफरेंट हो सकता है। तो जब ये P A Q बनेगा तो ये मैट्रिक्स जो है ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो चुका होगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि IR 0 0 0, ये आपका मैट्रिक्स बन चुका होगा। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। सो वी शैल अफेक्ट एवरी एलिमेंट्री रो transformations or column transformations of the product by subjecting the prefactor या post factor of A to the same. So operate these two column transformations. तो जब मैंने column transformation अप्लाई किया तो मैंने क्या किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, और इन ये जो वैल्यूज हैं इनको भी सिंप्लीफाई किया। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो पर्पस क्या है, आपको मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो करना है और जो नॉन जीरो मेंबर्स होंगे उनको 1 करना है। उसके बाद मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो अब इसके ऊपर यहां पर अप्लाई करना है, यहां पर अप्लाई करना है, यहां पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। उसके बाद मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अब देखो धीरे धीरे एलिमेंट्स जो है वो 0 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसको जीरो करना है, फिर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपका ये मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज I2 मींस 1 0 0 1, दिस 0 0 मींस O, this 0 0 means O, this 0 means O, like, and this is nothing but normal form, and this one is P, and this A as it is, and this one is Q. Okay, so this one is I2 0 0 0 is equal to P A Q, where P is this, Q is this. Okay, and from this rank of A is 2. Rank of A is 2. So with the help of reducing the given matrix to a normal form, we can find the rank of a matrix. Basically, in simple ways, in simple words, what is rank? The total number of non-zero rows in a matrix is known as rank of a matrix. The total number of non-zero rows in a given matrix is called rank of a matrix. लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होगा। आप मैट्रिक्स लोगे तो यहां तो नॉन जीरो रोज तो 3 है, लेकिन आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है ना। और ऑपरेशन अप्लाई करके कोशिश करिएगा किसी रो के सारे एलिमेंट्स को जीरो करने की। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो रैंक तो रिड्यूस हो ही जाएगा, क्लियर। और बाकी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो थोड़ा सा इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, 1-2 प्रॉब्लम्स की, देन
you will be expert for evaluating a non-singular matrices P and Q. Okay. तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हर स्टूडेंट्स का P और Q डिफरेंट हो सकता है. क्लियर? Okay. Next one is Gauss-Jordan method of finding the inverse. So this one is a statement. Those elementary row transformations. Remember, this one is a Gauss-Jordan reduction method. यहां पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, कॉलम की बात नहीं होगी यहां पे. क्लियर? सो दोज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस विच रिड्यूस ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू द यूनिट मैट्रिक्स when applied to unit matrix I gives the inverse of A. So those elementary row transformations which reduce a given square matrix A to the unit matrix when applied to the unit matrix I give the inverse of A. मान लो कोई मैट्रिक्स A दे रखा हुआ है, आपने उसको यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली. क्लियर? बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली, नॉट combination, not by using combination, either by row or by column. So let us see by using row transformations. So if we reduce a given matrix by a sequence of elementary row transformations, and when that sequence in a particular order applied on a unit matrix I, then it becomes the inverse of A, and that result is known as Gauss-Jordan reduction method for finding the inverse. So let the successive row transformations which reduce A to I results from pre-multiplication of elementary matrices R1, R2 and so on Ri. So that A here apply this first operation means multiply by first, just multiply A by this elementary matrix. Elementary matrix means you are going to apply elementary row transformations, then second, then third and so on, then ith row, and then it becomes I. Okay. So after applying this sequence of row transformations or this sequence of pre-multiplication of elementary matrices on A, it becomes I. Now post multiplying by A inverse, then A inverse, this and this A inverse. Now this A inverse is I and this I A inverse is A inverse. This means when the same sequence applied on unit matrix I, then it becomes A inverse. Very simple proof. Okay, Gauss-Jordan reduction method. So this completes the proof. So A inverse is equal to I. We know this result. So for practical evaluation of A inverse, the two matrices A and I are written side by side and the same row transformations are performed on both. As soon as A is reduced to I, the other matrix represented by A inverse. So in this case, write A is equal to IA. Okay. Then apply elementary row transformations. Elementary row transformation means ये जो पहला I है इधर भी I होगा, वो मैं लगा नहीं रहा हूं, मुझे नॉर्मल फॉर्म नहीं बनाना है. क्लियर? सो A कैन बी रिटन एज IA. तो आपने सेम सीक्वेंस यहां अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा I, ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा A. सो दिस मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A. और इन अदर वर्ड्स A इज इक्वल टू AI. यहां पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं. नाउ apply here column transformations here, then this becomes I, this becomes A, this becomes B. Okay, so B is inverse of A. So this one is the method for evaluating the inverse of a given matrix. So using the Gauss-Jordan method, find the inverse of the matrix. Okay, how can we evaluate the inverse of this matrix? So one way is you write A is equal to IA. Otherwise, write the same matrix side by side with the unit matrix of order 3. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, this A, this I. तो इससे क्या होगा कि जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करोगे तो थोड़ा सामने नजर आएगा कि कैसे आप अप्लाई कर रहे हो यहां पर एज वेल एज यहां पर. क्लियर? नाउ अप्लाई दीज टू रो ट्रांसफॉर्मेशंस. दिस वन इज यूनिट मैट्रिक्स, this one is a matrix A. Clear? This one is A, this one is I.
आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, इसको जीरो किया, ये देखो जीरो हो गया, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या था, इसको और इसको जीरो किया, देन अप्लाई दिस ऑपरेशन, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, क्लियर, यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो आपने ये जो 2 - 2 है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, क्लियर, एंड देन अगेन अप्लाई दिस ऑपरेशन, क्लियर। तो आपका ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये जीरो ऑलरेडी है, सेम ऑपरेशन यहां पे अप्लाई किया, एंड देन अप्लाई अगेन दीज operations and this operation, you will get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 unit matrix, or same operation applied over here. This one is the inverse of A, clear, this one is the inverse of A. So the inverse of the given matrix is 3 1 3 by 2 minus 5 by 4 minus 1 by 4 minus 3 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 4. तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जब भी आप प्रॉब्लम करोगे तो एक एक स्टेप को रीचेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीच में कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे इनवर्स को गलत बना देगी। एंड आफ्टर इवैल्यूएटिंग द इनवर्स, मल्टीप्लाई ए बाई दिस नंबर, दिस मैट्रिक्स। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ए बाई दिस बी, okay, you will get definitely I if B is correct, clear. If B is correct, then multiply A, the given matrix, by this matrix. So this one is the A inverse, okay, then definitely it becomes I, okay. So this all about today's lecture, but we have two more definitions, दो important definitions है जो पहले दो lectures में छूट गई थी, ठीक है। So first definition is row reduced matrix. An m by n matrix A, m by n matrix A is called row reduced matrix if the first non-zero entry in each non-zero row of R is 1. So first non-zero entry in each non-zero row of R is equal to 1. तो जितने भी रोज हैं उनमें जो भी नॉन जीरो एंट्री पहली होगी वो 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स की खासियत है ये, ठीक है ना, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। एंड ईच कॉलम ऑफ आर विच कंटेन्स द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ सम रो हैज ऑल इट्स अदर एंट्रीज 0। तो जहां पर भी वो 1 है, उस 1 के कॉलम के जो बाकी एंट्रीज हैं वो आपकी 0 होनी चाहिए। So that one is the beauty of this matrix, row reduced matrix. For example, identity matrix, and you know this definition of identity matrix, clear. So this one I4, तो देखिए ये नॉन जीरो एंट्री 1 है तो इसके बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 0 0 है। सेकंड रो में नॉन जीरो एंट्री 1 है, क्लियर, तो इसके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके बाकी के एलिमेंट्स जो है वो 0 0 है। थर्ड रो के नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसके बाकी एलिमेंट्स 0 0 0 है। फोर्थ रो का ये नॉन जीरो एंट्री है और बाकी के एलिमेंट्स 0 0 0। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। सिमिलरली I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I2 1 0 0 1, okay. So these are the examples of row reduced matrices, well known examples of identity or unit matrices. Now, examples of matrices which are not row reduced matrix. Now see, this first non-zero entry is 1, but this and this is non-zero, clear. So this means this matrix does not satisfy condition number A. Each first row does satisfy condition A but fails to satisfy condition B in column 3, clear. So this one is the example of not non-row reduced matrices. Now second, here 2, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, so first condition is not satisfied. This one is the first non-zero entry in this row, clear. Here 1, it's okay, these two members 0, right. Now this all 0, no problem. But due to this condition, this matrix fails to satisfy condition A because the leading non-zero entry of the first row is not 1.
So these are the examples which are not row reduced matrix. And second definition, row reduced echelon form or row canonical form. Second definition is also important, right? Row canonical form. So according to Webster, an echelon is a formation like a series of steps, like a series of steps. यहीं से पूरी डेफिनेशन का जो क्रक्स है वो इसी के ऊपर है, like a series of steps, echelon. So row reduced echelon form or row canonical form. So an m by n matrix A is called row reduced echelon matrix if A is row reduced matrix. इसका मतलब जो रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पहली नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो की 1 होनी चाहिए और जहां वो 1 एग्जिस्ट करता है उसके बाकी को जो कॉलम्स के मेंबर्स है वो 0 होने चाहिए. क्लियर? एंड सेकंड, एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल एंट्रीज 0 अकर बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्रीज. तो अगर मान लो रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है और किसी रो में सारे मेंबर्स 0 0 0 है, क्लियर, तो वो जो 0 0 0 वाली रो होगी वो सबसे नीचे रखी जाएगी. क्लियर? सो एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल एंट्री 0 अकर बिलो एवरी रो विच हैज ए नॉन जीरो एंट्री. एंड थर्ड स्टेप इज इंपॉर्टेंट. इफ रो 1 to R are non-zero rows of A and if the leading non-zero entries of row 1 occurs in kith column, I varies from 1 to R, then K1 is less than K2, less than K3 and so on less than KR. ये जो कंडीशन है ये इसको बनाती है like a series of steps. ओके, अब देखिए कैसे. So matrix is in row reduced echelon form if it satisfy all the following conditions. If a row has a non-zero entry, then the first non-zero entry is 1 called leading 1 in this row. Second, if a column contains a leading 1, then all other entries of that column are 0. So these two conditions are the conditions of row reduced matrix. Now third, if a row contains a leading 1, then each row above contains a leading 1 further to the left. So physical meaning of this statement is this. If a row contains a leading 1, then each row above contains is a leading 1 further to the left. Means K1 less than K2 less than and so on less than KR. Okay. So let us understand this statement with the help of example. Okay. Now identity matrix is the best example of row reduced echelon form. Zero matrix, no issue. Okay. Then see this example. Here non-zero entry 1, all other terms 0. Here non-zero entry 1, all other terms 0. Row reduced and this one, then steps here, this one and so on. Similarly, steps. Okay, 1 all members 0, 1 all members 0, 1 all members 0 and this 0. So 0 सबसे नीचे आएगी 0 rows और यहाँ पर 1 1 1 ये steps, इस टाइप के स्टेपिंग आपकी आनी चाहिए. ओके, K1 is less than K3 less than K3 K2 and so on. Okay. So here we have drawn the staircase formed by the leading variables. This is where the name echelon means level or height form comes from. Okay. So matrix in reduced row echelon form may contain rows of zeros. However, by condition C, these rows must appear as the last row of the matrix. Okay. So this one is the definition of row canonical form or row reduced echelon form. Okay. Thank you very much.